Welcome everybody. This is our third class in Basic Mathematics series for class 11th Physics. Before this we have made two videos, and in those videos we have discussed about logarithms, then we have discussed about derivatives, and we have also discussed about basic trigonometry. So if you have not watched our previous video, then you can go to our channel and there is a playlist named as class 11 physics. So you can watch all those videos over there, and if you like those videos and this video also, then please consider liking this video, sharing with your friends, and subscribing to our channel. It is a zero cost way for you to support us, and if you want to support us financially, then you can scan these QR codes. They are available here, and you can support us whatever amount you want, because while creating these videos we do need some study material books, so to prepare questions, and we also need hardware, computer hardware specifically. So some amount will be highly appreciated. So with this, let's start today's video. This is third video, and we will be starting with integrals. In last video we have uh, completed differentiation, basic trigonometry, and logarithms. Now we have two topics, integrals and graphs, left. So in basic mathematics class, so today we will do integrals, and there is a sub related topic with integral that is also attached to differentiation. It is maxima minima topic. We will also try to cover it in the same video, and hopefully we will do graphs in next video. So let's start our today's video about integrals. So in our last class we discussed about differentiation, and differentiation was rate of change of one variable, or you can say one function, or some function of some function with respect to some variable. There is a function, it includes some variable. So what we find, that how that function is changing with respect to some variable. And when we also discussed that there are two type of derivatives, one is partial derivatives and other are complete derivatives. Both we discussed in detail, and mostly we are doing it just complete derivatives. So what are integrals? So integrals are just reverse of derivative. Here we have a rate of change. From this we find function. In derivative we are given function, we find rate of change. In integral we are given rate of change and we find out the function. So let me give an example. We start with our basic example, that power formula we are going to start out. So in power formula, when we took derivative of x raised to power n, what we got? We got n x n minus 1 dx by dx, that is 1. So n x n minus 1. This was differentiation. Now we will do integration. So symbol of integration is, now symbol of integration, it is this curly symbol. Here is start point, here is end point, here is value or function, and here is another terms comes known as
whose respect to we are integrating. Let me explain it little. Suppose we are given 1, 2, 2x dx. So 1 is our start point, means we are going to integrate between 1 and 2. So it is our starting point, this is our ending point. We are going to integrate 2x and we are going to integrate with respect to dx. Integrating 2x with respect to dx. Let me write it another example, that we have, suppose theta is equal to 30 degree to theta is equal to 60 degree sine theta plus cos theta d theta. So here 30 degree is starting point, 60 degrees ending point. This is the function we are going to integrate, and we are going to integrate with respect to d theta. Okay, so this is the basics of that. How will you write the integral? Now we will do the same we done in the derivatives, that we discussed formula by formula, and then we done some examples. Here in this also we will do formula by formula. As compared to derivatives, where we had to learn lot of formulas, in integration for physics purpose only, you don't have that much to do. You have to deal only with the basic integrations. In case of differentiation, you might encounter some advanced differentiations there, but in case of integration, you will be encountering only very basic integrations, and those all you already know if you know the derivatives. That if you want to if you know how to calculate the derivatives, then you also know that how you will calculate the integral, because integral is just reverse of derivative. Let me explain how. Now, as per power formula, we are given that, as per power formula, we know that derivative of x raised to power n is nx n minus 1. So derivative is integration is just reverse of derivation. So we can write that x and n minus 1 integration, and most of the time these limits are not given to you. Only in numerical questions these limits are given to you. When we are doing only theoretical questions, then these limits are not given, so we are leaving these limits and we are integrating it with respect to x. We just added integration symbol and dx. Similarly, we can do on this side. Let it do it proper way. We are given this. Now what we do, we just add integration symbol on both of the sides. So integration dx, integration dx. So with this, all of dx get cancelled and we are just left with xn on this side, on our left hand side, and on this side we get nx n minus 1 dx. So integration of this gives x raised to power n, and we always know, we already know that if there is some constant term, then its derivative is 0, and if some constant term is in multiplication, then it comes out like this. If we took a derivative of 5x, then we know that 5 will come out and we have only derivative of x. Or similar here, n is constant, so n will come out and we are only left with x raised to power n dx. And we can arrange it like this. So xn by n is equal to integration of xn minus 1 dx. Or if we change it slightly, we put n is equal to n plus 1, then we will get this. We will get x raised to power n dx is equal to x n plus 1 by n plus 1. Means if you want to integrate xn dx,
you just, what will you do, you will just add 1 in power and divide by that power. In case of differentiation, what we are doing, we are bringing power in front and decreasing by 1, or means we are multiplying the power and then decreasing it by 1. Here we are increasing it by 1 and then dividing by it. So suppose we are given x raised to power 4 dx, then what we have to do, we will add 1 and then divide by that power. So the answer is x raised to power 5 by 5. And most of the time we also add some constant here, because we don't know that while derivative there was some value over here. Let me explain how. Suppose, for just example purpose only, suppose we have to calculate derivative of these two functions. First is x raised to power 5 by 5, and second is d by dx of x5 plus 10. So for this derivative number 1, 1 by 5 will come in front, this 1 by 5 will come in front, and now we will derivate x raised to power 5. How we will derivate? Power will come first, then we will reduce 1 from the power, 5 get cancelled, and we will be left with x raised to power 4. If we do same process here, we will again get 5x 5 minus 1 plus derivative of 10. And we know that derivative of a constant number is also 0. So in this case also we will get the same value. So in case of derivatives, we lost constant values. The constant values are lost. That's why while we integrate, we don't know that while we were derivating and we got this value after derivation, there was some constant or not, we don't know. That's why most of the time, if you are doing some numerical calculation, not theoretical calculation, only numerical calculation, we add some constant here. And this constant is determined using the start and end values. Starting value and ending value, we determine value of this constant while doing numericals for NEET and JEE. Once when we encounter this type of questions, we will do and we will solve them with initial and ending value, and we will also find the value of constant. So this is one example of how you can solve integrations. So our first formula that we just discussed right now, that derivative of integration of xn dx is equal to xn plus 1 by n plus 1. Similarly, there are other formulas like ex dx is just equal to ex, and we are also adding some constant here. Now we know that derivative of sin x is cos x. So integration of cos x will be sin x. Derivative and integrals are just reverse. We know that derivative of sin is cos. So integration of cos will be sin. Means cos x dx is equal to sin x plus constant. We know derivative of cos x is minus sin x. So integral of minus sin x dx will be cos x plus c, and we can exchange this negative sign, and this will become integral of sin x dx is equal to minus cos x plus constant. And you can also say that, sir, why don't we get a negative sign here for this constant? That negative sign will be adjusted automatically in the constant, because it is a constant, it can take any positive or negative value, so it will get adjusted automatically. And there is one more that you need to remember before after this we will start our basic questions, and that is 1 by x dx. And if you remember from our previous class, where 1 by x was derivative of ln x, or log e base x, so its answer is log e base x plus some constant, or you can write it as ln base x plus c.
So these are the few basic derivatives which you need to you might encounter while doing your numerical problems. And most of the time you are just using this one and these sine and cos one derivatives only. Most of the time you will be using this. For NEET students, for JEE students, there can be some advanced integrals also, but you will be doing them in your mathematics class, so it will be a lot easier for you. So let us do some examples of integrals. So it will cement your understanding that how you solve various integral when you encounter any one. So our first example, or you can say example A, is we have to integrate 5x square plus 3x minus 2 with respect to dx. There are no limits provided, so we will use it, solve it normally. Now, when you have to integrate and you are given terms in addition or subtraction, then you can individually integrate them. So here you can write that 5x square dx plus 3x dx minus 2 dx. And like in case of derivatives, when there was some constant term in the multiplication, then you can get it out from the derivative. Similar for integration, if there is some constant term, like here 5 is constant, here 3 is constant, here is 2 is constant, you can take out from the integral, as they will not get integrated as previously they were not getting differentiated. If some constant term is in plus minus in addition or subtraction, then it will there will be integration. But if some constant term is in multiplication, then it will just come out. And most of the time in integration, constant terms are in either in multiplication or in division. Like in this case, here 2 is alone, but 2 is in multiplication with dx, so 2 will come out. So we can write out this like 5 x square dx plus 3 x dx minus 2 dx. Now using power formula for integration, what we will do, we will add 1 in power and divide by that, plus 3. We will add 1 in power and divide by that. And here we don't have x, but we can write it like this. This term can be written like this: 2 x raised to power 0 dx, because something raised to power 0 is 1, so we can write it like this. And now we can solve this like this: x 0 plus 1 by 0 plus 1. And we will also add a constant term. So our answer will be 5 x cube by 3 plus 3 x square by 2 minus 2 x 1 by 1 plus constant. So this is our answer. Let us do a second example. Here we have 4 sin x minus 2 by x dx, and we have to integrate this. Now then again, we can split the integration, and it will be 4 sin x dx minus 2 by x dx. Again, 4 is a constant, 2 is a constant, and they are in multiplication, so they will come out of the integration. So 4 sin x dx minus 2 1 by x dx. So from here we will get integration of sine. We know differentiation of sine is cos, and differentiation of cos is minus sine. So integration of sine is minus cos. So here we get minus cos x
Now minus 2 integration of 1 by x is log e base x, and here we get the constant value. So our final answer is minus 4 cos x minus 2 log e base x plus constant. Okay. Now coming to one more example. Suppose we have to integrate dx by 2x plus 10. Now we have to integrate this. For this, what we can do, we will do that. Suppose we will consider that z is equal to 2x plus 10. Okay, z is equal to 2x plus z 10. Now what we will do, we will do derivative of both those sides. Dz is equal to 2 dx, and derivative of 10 is 0 because 10 is constant. So we got value of z and we got value of dz. We will put these values over here, and we will get value of dx is dz by 2. From here dx is dz by 2. So dz by 2 by z. Okay, we can write it like this: 1 by 2 dz by z, and 1 by 2 will come out, and integration of dz by z, we know from this that 1 by x dx was log e base x, and this is similar. 1 by z into dz, it will come out as log e base z plus some constant. Now we'll put this value of z again here, and our answer will be 1 by 2 log e base 2x plus 10 plus some constant. So this is our answer. Now let us move to some another example. You will not encounter any more difficult derivatives in case of physics if you are a NEET student. In case of JE and JE main, JE advanced, then there will be a more advanced level integral and derivatives, but you will get to know them easily because you will be doing them in your mathematics class. So let us do one more example. Suppose you have to integrate 2x plus 3 raised to power 4 dx. We have to integrate like this. For these kind of things, like in the previous one, we don't have any direct formula. We have only formula for xn dx is equal to xn plus 1 by n plus 1. But there needs to be only x. And also this formula valid for y and dy. It will be yn plus 1 by n plus 1. Okay. And suppose if you are integrating y and dx, if you are integrating this, then you will think you will assume that yn is constant, so it will become then yn is constant, then yl will come outside and we will be getting dx only, and its value you will find at like this: x 0 plus 1 by 0 plus 1 or x into yn will be your final answer. So now coming back to this one, we don't have any direct formula for this, so that's why we do substitution here. Like in the previous example, we do substitution. Like in this example, we will also do substitution here. We'll assume that z is equal to 2x plus 3, and we will derivate dz is equal to 2 dx, and from here dx is equal to dz by 2. We will put this value and this value in this formula. So this is now z, so z4, and dx is dz by 2. This half will come outside of integration, and this is z4 dz. Now we can apply power formula like this. So it will be half z4 plus 1 by 4 plus 1, and we will get
half z5 by 5. Answer will be z5 by 10. And now we will put value of z is, that is 2x plus 3 raised to power 5 by 10. If you want to find out this answer directly, then what you can do, you can just do like this. If you want to power formula here, you want to apply power formula here, then it will be 2x plus 3 power 4 plus 1 into 4 plus 1 into derivative, divide by derivative of this. So divide by derivative of this is 2. And if you calculate this, then it will be again the same, 10. So either you use this method or this method. This one be a more understandable method for you, because here you follow a proper step method, and then you reach to the answer. This is a shortcut, and you might make some mistake. It will take it will save you some time, but it is a shortcut. So if you want to use this type of shortcut, it is better to you that you do lot of practice for this type of numerical, so that when you use shortcuts, you don't make any mistakes. So with this, we have completed our basic integration part. And if we encounter any more difficult integrations, then that will be we will be using while doing our numericals, and we will also be explaining when we will use that type of integration in numericals. Now we have another topic that is similar or related to that integration and differentiation, that is maxima minima. Maxima and minima. Now suppose a function, we have a function here. Suppose we have function y is equal to, or f of x is equal to x cube minus x square plus 1. Suppose this is a function, and we define a y, f of x we write as y. Now how to plot this function, आप इस function को plot कैसे करेंगे? For that, what we can do, that we can cherry pick the values. Means we can use x is equal to 1, then we find value of y, then we put value of x is equal to 2, then 3, then 4, something like this, that we make a table. Here we find the value of x, and then we calculate the value of y. Suppose when x is 1, so 1 cube is 1, 1 minus 1 0, so y is also 1. When x is 2, so 2 cube is 8, 8 minus 4 4, 4 plus 1 5, so x2, y is 5. When 3, so 3 cube is 27 minus 9 plus 1, so 28 minus 9, it will be 19. And suppose x is minus 1, we are taking x is minus 1 and 0 also. So when x is minus 1, what we get? This is minus 1 minus 1, so minus 1 minus 1 plus 1, so what we will get? Minus 1. And on 0, y will be 1. So let me rub this. Now if we plot this function on graph, suppose this is our graph, and here we have values. This is our x side and this is our y side. So 1 2 3 4 5. On y we will be taking suppose multiple of 5, 5 10 and 15.
and we have to make a copy of this also, and one more copy also in this direction. Now we have proper. So here suppose -5, -10, here -1, -2. Okay, when x is -1, y is -1. So something like here. These are just approximate values. So x is -1, y is -1. So suppose something here. Our function value is here. X is 0, y is 1. So x is 0, y is 1. Suppose here. Now x is 1, y is 1. Something like here. For 2, we have 5 here. For 3, we have 19. Suppose it is here. 19 is here, I suppose. So if we combine these points, we will get curve like this. This will go forward in this direction and downward in this direction. Now, this is a very basic function. And if you want to plot this, we can have infinite number of points to whom which we can plot it. But it is not possible for us to plot it for every point. And sometimes it is necessary for us to know that when this type of function will become maximum and when this type of function will become minimum. You can have some other type of function also, like suppose you have this function like this. You have another function which goes like this. Now, if you want to calculate its maximum and minimum value, how you can do it? It will not be easy to calculate every value manually. So this is the problem of maxima and minima, that we have to find a maximum value for a function and minimum value for a function. So we will solve this problem with the help of derivatives. Now let's start that how what is the steps and what is the basic terminology behind solving this problem. So we know that derivatives are rate of change of function. ये हमें पता है that derivatives gives us rate of change of function, and this rate of change is known as slope of function, and this slope is related to theta angle. Now which theta? So let me explain. Suppose let me draw it again so that I can explain it properly. Again have a graph. We have this 2D geometry, and here we have a function. Suppose something like this. हमारा function ऐसे work करता है. Suppose like this. This is the curve of our function. This is x and this is f of x or y. Okay. Now suppose we find a derivative. हम इसका derivative निकालते हैं at this point. At this point we find a derivative और हमें उसकी कोई वैल्यू मिलती है. Suppose this function is, हम आपको एक्चुअली करके दिखाते हैं that y is equal to fx is equal to x square. तो ये x square की कर्व है. अगर आप x square को प्लॉट करते हैं तो आपको ऐसी ही कर्व मिलेगी. एंड सपोज ये जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं दैट इज x इज इक्वल टू 5. सो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें दैट इज f ऑफ x, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो d by dx ऑफ x square, इट विल बी 2x.
और हम x इजिकल टू 5 पे निकाल रहे हैं, तो इसका मीनिंग होगा f ऑफ x एट x इजिकल टू 5 इजिकल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। मीन्स यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। ओके, दैट इज क्लियर। सो ये जो डेरिवेटिव है इसको कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक ट्रायंगल बनाओगे। ये ट्रायंगल ऐसे इस पॉइंट से क्रॉस होती होगी। वेट ए मिनट, लेट मी मेक इट स्लाइटली थिकर। आप यहाँ पे एक ऐसी ट्रायंगल डिजाइन कर सकते हो जो इस पॉइंट से पास होती हो, उसका एक परपेंडिकुलर होगा और इसका एक बेस भी होगा, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू स्लोप स्लैश डेरिवेटिव ऑफ actually tangent theta, slope derivative of curve at this point। आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 कैलकुलेट की, तो जो आपकी इसकी ट्रायंगल है, जो आपकी ट्रायंगल बनी, हम इसको ट्रायंगल को साइड में अलग से बना देते हैं। ये जो हमारी ट्रायंगल बनती है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसमें जो टेंजेंट थीटा होगा, सपोज यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा हो जाएगा ए बी बाय बी सी, और उसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, 10। सो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10 और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 1, और जो आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 1। सो इससे आपको पता क्या चला, मीन्स हमने जो इतना मैथमेटिक्स किया इससे आपको क्या पता चला। अब आप एक सिनेरियो सपोज कीजिए जहां पे ये थीटा 0 हो जाए, मीन्स ए और बी पॉइंट दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए। तो अगर थीटा 0 हो जाता है तो टेंजेंट थीटा भी 0 हो जाएगा, और अगर टेंजेंट थीटा 0 हो जाता है तो स्लोप भी 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। मीन्स वहां पे कर्व आपकी स्ट्रेट होगी, समथिंग लाइक दिस, कि वहां पे आपकी जो कर्व है वो ऐसे स्ट्रेट होगी, बिकॉज स्ट्रेट ही ऐसा है जहां पे आपको थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। और इन शॉर्ट, अगर आप इस सब से कंफ्यूज हो रहे हो, सो आप जस्ट इतना रिमेंबर रख सकते हो, या इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, दैट इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज 0, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। ओके, तो अभी हमें इससे हेल्प क्या मिली कि हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे पता करेंगे। तो हम मैक्सिमम मिनिमा कैसे पता कर सकते हैं, अगेन गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, इस अगर हम इस ग्राफ पे जाएं तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे, जब हम इन पॉइंट्स पे स्लोप निकालेंगे तो हमारे स्लोप्स समथिंग लाइक दिस आएंगे। जो हमारे स्लोप्स होंगे वो इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, इसका एंगल पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव स्लोप देगा। अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हो तो स्लोप ऐसे आएगा, और इसका एंगल 0 होगा तो नेगेटिव स्लोप 0 वो देगा, डेरिवेटिव देगा। और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो इस पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप मिलेगा आपको, यहाँ पे टेंजेंट थीटा नेगेटिव होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। अब हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं कि आप रियल टाइम में, रियल लाइफ में, या जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वहां पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सपोज हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है जहां पे हमें मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करना है, हम
यही फंक्शन लेके चलते हैं कि हमें इस फंक्शन पे मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम एक बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, बिकॉज इसमें एक जो प्रॉपर्टी आएगी वो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो 9 माइनस एक्स माइनस 3 क्यूब, ये हमारे पास एक फंक्शन है। हमें ये पता करना है ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सो डी वाई डी एक्स, 9 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला लगाएंगे, पावर आगे x माइनस 3 स्क्वेयर, 3 माइनस 1 स्क्वेयर, एंड नाउ आप इसका डेरिवेटिव करोगे। सो x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0। सो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है दैट इज माइनस 3x माइनस 3 स्क्वेयर। आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो माइनस 3x माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप राइट कर सकते हो x माइनस 3 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। सो इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर या तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या ये फंक्शन मिनिमम होगा। अभी हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये करने के लिए कि हमें पता करना है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, हम क्या करते हैं, एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं, जिसको सेकंड डेरिवेटिव बोला जाता है। सो जब हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, तो एक बार हम डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके हैं तो आंसर ये आया था। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सो माइनस 3 एज इट इज रहेगा, पावर आगे आएगी x माइनस 3, 2 माइनस 1, अगेन x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। सो आंसर विल बी माइनस 6x माइनस 3 पावर 1। सो इस केस में जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आता है, अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस 6x माइनस 3, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे x इजिकल टू 0 पुट करते हो, 3 पुट करते हो, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाता है। मीन्स ना तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा है ना मिनिमा है। मीन्स ये पॉइंट कैसा है, स्लाइडर पॉइंट है, और आपकी जो फंक्शन है वो समथिंग लाइक ऐसे है। जो आपका फंक्शन है वो समथिंग लाइक ऐसे है कि आपका फंक्शन बीच में कांस्टेंट हो जाता है कहीं पे, उसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, फंक्शन ऐसे बीच में कांस्टेंट हो जाता है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 3। उसके अलावा फंक्शन मैक्सिमा पे इनफाइनाइट पे जा रहा है और मिनिमा पे इनफाइनाइट पे जा रहा है। मींस इस फंक्शन का अपना कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। सो अनदर एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, पावर को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे हमने 3 से किया, अब हम स्क्वायर करते हैं। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 स्क्वायर। तो फिर से हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, 9 माइनस 2x माइनस 3 and derivative of x1 and 3 derivative 0. So 9 minus 2x plus 6, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे 2x नेगेटिव 2x प्लस 15। वी मेड ए मिस्टेक हियर, 9 का डेरिवेटिव 0 होगा बिकॉज 9 एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो इट विल बी 0 एंड आवर आंसर विल बी माइनस 2x प्लस 6। अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो 2x plus 6 is equal to 0 implies minus 2x is equal to minus 6 and means x is equal to 3. So again हमारा x is equal to 3 आया, तो इस पे या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है या एक स्टेडी पॉइंट हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सो हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव इस वैल्यू का करेंगे बिकॉज हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करके हमारे पास ये आया था। तो जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो इट विल बी माइनस 2 और 6 का डेरिवेटिव 0। तो अब देखिए आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, और जब भी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो इसका मीनिंग होता है मैक्सिमा। मींस
इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, x इजिकल टू 3 पे आएगी। और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है ये होगी 3 पे, बाकी की सभी वैल्यू इससे नीचे ही होंगी। हम एक अनदर एग्जांपल करते हैं जिसकी आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सपोज कीजिए हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन इज x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस x। सो ये हमारे पास एक फंक्शन है, लेट इज मेक इट x क्यूब सो दैट हमें थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिल सके। सो अगेन मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, and I think it will be a quadratic equation. So पॉइंट्स के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, और जब सॉल्व करेंगे सो इट विल बी माइनस बी प्लस माइनस 400, 20 स्क्वायर 400 माइनस 12 बाय 6। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो हम ये सपोज करते हैं कि 400 माइनस 12 करके जो भी अंडर रूट करके आएगा उसको 19 लिख लेते हैं, सो दैट हम इजिली सॉल्व कर सकें। सो 20 प्लस माइनस 19 बाय 6, तो हमारे पास दो पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट विल बी जब हम ऐड कर रहे हैं 39/6, और सेकंड पॉइंट विल बी -1/6 जब हम यहाँ 1/6 जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारे पास दो पॉइंट है तो हमें देखना है कि किस पे पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव आता है, या किस पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और ये जस्ट हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, सो दैट हम कैलकुलेशन फास्ट कर पाए। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, ये जस्ट हम आपको सो दैट इजीली एक्सप्लेन कर पाए, दैट्स व्हाई हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, बिकॉज जो ये वैल्यू थी हमने रैंडमली चूज कर ली थी। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी ऑफ दिस वैल्यू 6x minus 20। ओके, तो हम पहले सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं 39/6 पे। सो जब x इज इक्वल टू 39/6 है तो उस केस में 6 39/6 माइनस 20, तो यहाँ पे 39 माइनस 20 आएगा, दैट विल बी 19, और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है मिनिमा, मीन्स यहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा। और जब हम 1/6 पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/6, तो हमें मिलेगा 6 इंटू 1/6 माइनस 20, इट विल बी -19। सो नेगेटिव वैल्यू, और इसका मतलब है मैक्सिमम, मीन्स जो फंक्शन की कर्व है वो x इज इक्वल टू 1/6 पे मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगी और 39/6 पे मिनिमम वैल्यू पे जाएगी। तो अगर आप फंक्शन की कर्व देखोगे तो फंक्शन की कर्व कुछ ऐसे दिखाई देगी। लेट मी ड्रॉ कोऑर्डिनेट। सपोज ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड हम 39/6 एंड 1/6 प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये सपोज 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। सो जो 1/6 होगा वो अराउंड सपोज यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमें नेगेटिव मिला, यहाँ पे मीन्स फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो सपोज कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो फंक्शन आपका यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और 39/6 यानी कि अराउंड 6, सो 3, ये 3 है, 1 ये 2 है, 3 4 5 6। सो 39/6 सपोज यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमें मिनिमम मिला है, तो मीन्स यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी, समथिंग लाइक दिस। तो आपका फंक्शन इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में ओसिलेट करेगा, बिकॉज उससे नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज उससे नीचे कोई वैल्यू है नहीं, और वो उससे ऊपर भी नहीं जा सकता, बिकॉज उससे इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। तो फंक्शन इन दोनों के बीच में ही ऐसे रैंडमली ओसिलेट करेगा दोनों साइड। सो दैट्स हाउ आप मैक्सिमा मिनिमा का यूज करके फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ आपको इसका एक रियल लाइफ मींस जो आपके एग्जाम में आता है उसका एक रियल क्वेश्चन दिखाते हैं कि आपके क्वेश्चन के बेसिस पे कैसे पूछा जाता है। सो लेट मी गिव यू क्वेश्चन स्टेटमेंट जहाँ पे आप मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर सकते हो, और ये आपका एक जेई मेंस और या जो आप जेई एडवांस लेवल बोल सकते हो उसके लेवल का क्वेश्चन है। सो आपको एक फंक्शन गिवन है, मींस फोर्स की वैल्यू गिवन है। फोर्स ऐसे वेरी करता है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो हम मेथड यूज करने जा रहे हैं वो शायद अभी आपके लिए थोड़ा हाई हो, थोड़ा एडवांस लेवल पे हो, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मींस ये मैं सपोज करता हूँ कि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशंस को। सो आपको यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें शायद समझ ना आए, बट जहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमा का यूज करेंगे, अगर आप वो चीजें समझ पा रहे हैं, मींस आप जो जो हम बताना चाह रहे हैं उसका आप रूट चीज को, उसका जो बेसिक्स है उसको आप समझ चुके हो। सो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ये गिवन है, और हमें पूछा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हमें कर्व या ग्राफ बताना है कि किस टाइप का होगा। और जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका ऐसे है, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन समथिंग लाइक दिस है। तो अगर हम कर्व्स को देखें, हम पहले जो ऑप्शंस है हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं और इनको हम मेंशन कर लेते हैं नेमिंग के साथ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सो अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पे एक मिनिमा पॉइंट आया हुआ है। इस कर्व के अंदर एक मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद कर्व, इसका कोई मैक्सिमा पॉइंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये इन्फाइनाइट तक जा सकती है और यहाँ पे भी इन्फाइनाइट तक जा सकती है, पर मिनिमम यहाँ पे आया हुआ है। ऐसे बी के अंदर भी एक मिनिमम आया हुआ है, और सी और डी के अंदर, दोनों के अंदर एक एक मैक्सिमम पॉइंट है। मीन्स अगर हम कोई इक्वेशन फॉर्म कर पाए और उस इक्वेशन से हम मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर पाए, तो हम जो हमारी कर्व है उसको 2 ऑप्शंस में रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कर्व में मिनिमम आ जाता है कि हमारी कर्व के अंदर मिनिमा है, तो हम इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर हमारी कर्व के अंदर मैक्सिमा है तो फिर इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो यहाँ पे पूछी गई है, वो फोर्स का इंटीग्रेशन होती है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपको बेसिक इंटीग्रेशन का भी एग्जांपल मिल जाता है। सो इट विल बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये a और b कांस्टेंट है और नेगेटिव भी आप बाहर निकाल सकते हो। सो विद दिस माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ए, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 है तो आंसर विल बी 2/2, और यहाँ पे पावर 2 है तो आंसर विल बी 3/3। सो ये आते हैं आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। ओके, तो इसकी कोई ना कोई कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कर्व है। तो अगर आप u इज इक्वल टू, और यहाँ पे साथ में आप u इज इक्वल टू एक्स को 0 पुट करते हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मीन्स जब x इज इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इस केस में जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन फिनिश हो जाता है, बिकॉज ये x 0 पे 0 नहीं है। आपके पास ओनली 3 ऑप्शंस बचते हैं जो x इज इक्वल टू 0 पे 0 होते हैं। नाउ अब हम इसका क्या निकालते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। सो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और देन सेकंड डेरिवेटिव। सो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं पहले। सो इट विल बी माइनस ए एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x/2 प्लस बी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², पावर आ गया एक्स में से, पावर में से एक कम, तो ये आपके पास आंसर आएगा।
एंड हम एक चीज भूल गए, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होता है साथ में। सो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आपका यहाँ पे हर जगह रहेगा, तो इसको ये पॉजिटिव बना देगा, इसको नेगेटिव बना देगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हम एक मिस्टेक कर दी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फोर्स का नेगेटिव इंटीग्रल होता है। सो ये वैल्यू आपके पास आती है, कैंसल, ओके, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो आपको पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप ये दोनों को जीरो के इक्वल पुट करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को। जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी a बाय b, और मींस आपका a बाय p कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है या सेडेंटरी है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो, और सेकंड डेरिवेटिव में जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी a माइनस 2bx, और जब सेकंड डेरिवेटिव में आप x की ये वैल्यू पुट करते हो तो आपको आएगा a माइनस 2b बाय a माइनस b, सो इट विल बी नेगेटिव a। मीन्स सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कर्व में आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। ओके, सो विद दिस आपके पास अभी दो हिंट हो गए। पहला, x इज इक्वल टू 0 पे कर्व 0 करती है, और दूसरा मैक्सिमा करती है। तो x 0 तो तीनों में 0 था, बट मैक्सिमा आपका सिर्फ इन दो कर्व्स के अंदर, एक इस कर्व के अंदर आपके पास मैक्सिमा है और एक इस कर्व के अंदर आपके पास मैक्सिमा है। तो ऐसे आप जो आपका आंसर है उसको टैकल डाउन कर सकते हो, अपने अपने ऑप्शंस को आप रिड्यूस कर सकते हो, जो पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास होंगे कि आपके पास पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है। नाउ अगर आप वापस पोटेंशियल एनर्जी को देखते हो, अभी जो हमारे पास आई थी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी, ax माइनस बी एक्स क्यूब बाय 3। तो इस सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन को ध्यान से देखते हो तो ये जैसे ही यहाँ पे एक्स क्यूब है, जैसे ही आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये वाली टर्म बड़ी होती जाएगी, तो टाइम के साथ ही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। मींस जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है, बिकॉज ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है, इसके अंदर एक मैक्सिमा भी है, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और ये कर्व नीचे की तरफ जाती जाएगी वैल्यू। सो ऐसे आप मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको उससे एक बहुत इजी प्रोस्पेक्टिव मिल जाता है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम आपके लिए एक टूल का काम करता है। सो विद दिस हम ये अपना आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, और इस लेक्चर के बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज में वो ग्राफ्स के रिगार्डिंग होगा, कि हम आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ बताएंगे कि कैसे अगर आपके पास कोई ग्राफ आता है तो आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो। वो शायद एक शॉर्ट वीडियो होगा, इतना लंबा नहीं होगा जितना ये 1 आवर वीडियो हो गया ऑलमोस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो, देन प्लीज कंसीडर liking this video, sharing this video as much as possible, and subscribing to our channel, because it helps a lot. It makes us feel motivated when you share and subscribe to our channel. And also do share your feedback. अगर आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, अच्छी बुरी किसी भी तरह की, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपने फीडबैक को, अपने सजेशंस को। एंड एट लास्ट, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं एनी हाउ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके वट एवर अमाउंट यू वांट आप हमें सेंड कर सकते हैं। इससे हमें एक बेटर हार्डवेयर एंड मोर बुक्स खरीदने में मदद मिलती है, बिकॉज बुक्स आल्सो हैव कॉस्ट, एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसकी मदद से हम ये वीडियोस बनाते हैं उसका भी कॉस्ट होता है। सो हमें वो चीज़ें अपग्रेड करने में और कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प मिलती है। सो विद दिस आई एंड टूडेज वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।